So notice for all the offline batch students that from tomorrow onwards our classes are going to start on offline and physical mode in a classroom manner. So जितने बच्चे ऑफलाइन बैच में हैं प्लीज आकर क्लास ज्वाइन करें और क्लास लें. ठीक है, वैसे भी ज्योग्राफी का सिलेबस और 10-15 डेज में ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद आपका नया सब्जेक्ट करिकुलम शुरू होगा. ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम इन कमिंग 10-15 डेज इट इज़ गोइंग टू एंड. तो मेरे साथ 15 दिन 15 क्लासेस और आप लोग हैं. ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग क्लासेस बीच में होगी. बीच में कभी फिर मैपिंग क्लासेस भी होगी. 10 क्लास जो है मैप्स की होगी करंट अफेयर से रिलेटेड. तो जो मेन कोर्स सिलेबस है जीएस पेपर 1 का 3 के साथ जो हम मानकर चल रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, वो और 15 लेक्चर्स आगे पीछे आई विल कंप्लीट. ठीक है, सो अर्बनाइजेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑन urbanization. So today the urbanization has a background. हम लोग सिटीज पे बात किए, बैकग्राउंड ऑफ सिटीज पे बात किए, है ना. बट इसका भी एक बैकग्राउंड है अर्बनाइजेशन के पहले, दैट इज सेटलमेंट. राइट, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट. Human settlement. So today's class is totally dedicated to settlement. Then type of cities इंडिया में या वर्ल्ड में किस तरीके से कैटेगराइज हुआ. सो पहले डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में आपके दिया है, हम बुक अगर यू ऑल आर कीपिंग योर बुक टुगेदर इन फ्रंट, सो दिस इज द बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. वर्ल्ड का भी है 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी. तो इसमें जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी ने जो कोट किया है, लेट्स राइट इट फर्स्ट एंड देन बाकी जगहों पे जो कोट है सेटलमेंट्स के डेफिनेशन वो देखते हैं. तो ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स क्या है, इसका मीनिंग. इट्स मीनिंग इज क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स. इट्स मीनिंग इज क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स. क्लस्टर मतलब एक समूह होता है ना. dwellings या dwellers, those who are movable, right, those who are movable. So cluster of dwellers of any type or size. Cluster of dwellers of any type or size where human beings live. Where human beings live. क्लस्टर, अब हम लेट्स से सेटलमेंट्स पे बहुत तरह के सेटलमेंट हैं, लेकिन हम लोग अगर बात करें अर्बन सेटलमेंट की और अर्बन सेटलमेंट का सैटेलाइट इमेजरी देखें, so if we look to the urban settlement type of imagery, so you have a cluster settlement एक साथ है. Like this, the houses, this is the main road, it has streets, different streets, है ना. Like this, between the houses गलियां होती हैं, and then again behind the road, sorry, other side of the road, you have again settlement, right. So here
cluster of dwellers who came together and settled down, है ना, where the human beings live is called, या it is known as human settlement. अब ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जहां पे इंसान रह रहे होंगे, बाघों के सेटलमेंट को हम सेटलमेंट ऑफ टाइगर्स कहेंगे, है ना. So cluster of dwellers where human being lives is called human settlement. Write it down everyone. For the purpose of human settlement, है ना, for the purpose of human settlement, people came together or come all together, write it down in that way, people come all together for cultivation, agriculture, agriculture includes your keeping of animal husbandry, that's why I used cultivation for farming, and then agriculture involves keeping animals, rearing animals. So cultivation and agriculture, ये पहले ही बता दिया है क्लासेस में. And sharing a common space and area for several community purposes, like marriage, achievements, family planning, celebration, etc. Festivals, yes of course, festivals, etc. तो जहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं वो उनकी कम्युनिटी भी बन जाती है, बिकॉज दे ट्राई, मतलब इधर सेटलमेंट्स का अगर बैकग्राउंड देखें तो आज अगर इंडिया की कम्युनिटी को हम देखें, सो एक कम्युनिटी कहीं ना कहीं एक साथ सेटल्ड हुई होगी एंड दे आर widespread in the whole world, but community itself, with the term of community, what they keep in their surnames or in their history of coming from. तो वहाँ पे भी सेटलमेंट का बैकग्राउंड है कि आसपास बसे आपस में ही डिफ्यूजन हुआ है इन टर्म्स ऑफ मैरिज और फैमिली, एंड देन दे इवॉल्व, राइट. तो सेटलमेंट है अर्बनाइजेशन या रूरल ज्योग्राफी से भी रूरल पार्ट को पढ़ें, बिकॉज यूपीएससी के सिलेबस में उतना रूरल पार्ट का जिक्र नहीं है, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस कल की क्लास में स्मार्ट सिटीज़ क्या, रूरल अर्बन प्लानिंग का को रिलेशन क्या है, स्मार्ट रूरल एरियाज़ के बारे में किस तरह से गवर्नमेंट के अप्रोच हैं, दुनिया के कोलैप्स्ड सिटीज़ कौन कौन से हैं. अभी हमने जकार्ता के बारे में डिस्कस किया, सो इट्स ओवर पॉपुलेटेड हाईली, इट्स अ कोलैप्स सिटी. बीजिंग किस तरीके से कोलैप्स सिटी बनते बनते अपने आप को इवॉल्व करता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ कंजेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, उस पर भी हम लोग उसका एक केस स्टडी कल की क्लास में देखेंगे. Yes, so the settlement has two settlements. One is your rural settlement and one is your city settlement. Rural settlement and urban settlement. So I am doing a polling here. कितने लोग हैं ऑनलाइन क्लास में अभी? Let me check how many of you are. बस दिव्या, मंजोत, अभय, नकुल, ये 4 लोग ही हैं, बाकी लोग क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? Those who are not going to attend the classes, which means that they don't show sincerity and discipline, which means that आप IAS बनने के अनुशासन में वैसे ही पीछे हो गए हैं. अगर आप में कक्षा में बैठने का 2.5 घंटे का दृढ़ संकल्प नहीं है तो जीवन में अनुशासन में आप पहले ही पीछे हो गए.
तो इस इंस्टीट्यूट को आपने जो पैसे दिए हैं आईएएस की तैयारी के लिए वो कहीं ना कहीं फेल्ड है। रिकॉर्डेड वर्जन देखने की जो क्रिया है उसको आप कर सकते हैं, बट आई थिंक वो कभी अगर कहीं जा रहे हैं तो देख लिया, कभी अगर उस समय पे उपलब्ध नहीं है कक्षा के, इफ यू आर नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइज टाइम ऑफ द क्लास, यू मे सी द क्लास इन रिकॉर्डेड फॉर्म, दैट इज फॉर योर ईज, है ना। लेकिन अगर आप अनुशासनबद्ध नहीं हैं तो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सेइंग थिंग्स दैट यू हैव फेल्ड और यू आर फेलिंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. If you have taken admission here, I'm not saying that you must take the class, you should take the class. If you have given here your money and capital, you must. So, 4 लोग हैं क्लास में, तो how should I poll? एक मिनट. Yeah, good evening. So, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस सेटलमेंट से आ रहे हैं, रूरल और अर्बन. सो आई कैन गिव यू केस स्टडी ऑफ योर ओन एरिया. अब है, वेर आर यू फ्रॉम, कमिंग अर्बन स्पेस और रूरल स्पेस? दिव्या, व्हाट इज योर स्पेस ऑफ लिविंग, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट? मंजोत, अर्बन एरिया. अर्बन, ओके. Anyone from rural so that I can compare? नगर निगम, या इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ अर्बन रूरल. इसको भी हम कल पढ़ाने वाले हैं. अब है यही वाला जो बात हम आज कहें. यस, बट इट्स अ रूरल एरिया. नगर निगम बन चुका है, मतलब अर्बन स्प्रॉलिंग हो रहा है, अर्बन की तरफ बढ़ रहा है ना. नकुल, यू हैव बीन इन रूरल एरिया. तो यहाँ पर गिव मी 2 केस स्टडीज. मंजोत, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर योर ईयर्स? क्या वहां पे मोहल्ले का नाम किसी कास्ट या कम्युनिटी के नाम पे है? इज देयर सो एनीथिंग? व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज इफ द अर्बन सिटी इज ग्रोइंग, पीपल बाइज लैंड एंड बिल्ड होम, देयर इज नो concern of that where the community, what kind of community, what variety of community is living all together, because that's the urban space. तो वहाँ पे charm होता है to live in the city. So people just see the space कि इतना बड़ा घर हमें दिख रहा है, इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया. But if you see the rural settlement, let's say the case study, नकुल, क्या वहाँ पर मोहल्ले हैं जहाँ पर एक ही कम्युनिटी के लोग अपने आसपास रहते हों, पट्टेदार हो गए, भाई भैयात जिसको कहते हैं, या अपने ही एक्विटेंस रिलेटिव्स होते हैं जो एक साथ आपस में ही घर बनाकर रह रहे हैं? यस, ठाकुर्स, जादव्स, बनियाज, है ना, ब्राह्मण्स. सो द रूरल सेटलमेंट इज वे मोर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट. इसको अगर आप सोशल ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी में भी समझे, इंडियन स्ट्रक्चर को, या कहीं पे भी इफ यू गो, कहीं का भी अगर आप सोशल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, लेट्स से फॉर अमेरिका, लेट्स से फॉर जापान, तो वहाँ पे भी कम्युनिटी ग्रुपिंग्स जो है वो अपना, कहते हैं ना कि हम लोग अभी अर्बनाइजेशन में जब बात कर रहे थे कि व्हाट इज द गुड स्पेस टू लिव, तो हमने क्या बात किया कि जहाँ पर अपनी कम्युनिटी, अपने जैसे लोग दिखे, लोग प्रेफर करते हैं, दे शुड स्टे देयर, है ना. तो रूरल सेटलमेंट में आपको आज भी ये वाला ग्रुपिंग और नोडल सेटलमेंट देखने को मिलेगा. रीजन इज कि दिस इज रूरल स्पेस इज अ नेटिव स्पेस. वहां से आप कहीं उखड़ कर नहीं बस रहे हैं, जहां पर भी बस रहे हैं, वेर एवर यू आर सेटलिंग डाउन, दैट इज योर नेटिव प्लेस. ऑल ऑफ द पीपल आर एक्वाइंटेंसेस, रिलेटिव्स. सो यू विल बी demanding कि you must invest your capital to building a home where your community is living. But in urban settlement, there is only charm that pulls you to urban city is that it's a urban city. It has lot of amenities, it has lot of facilities. So वहाँ पे जो settlement है वो इन तरीके के bifurcation से टूट जाता है. वहाँ पे आपका घर किसी मोहल्ले का नाम स्पेसिफिक कास्ट या कम्युनिटी के नाम पे नहीं रहता, आपके आसपास ठाकुर्स भी रह रहे हैं, एसिमिलेशन ऑफ कल्चर हो रहा है, एसिमिलेशन ऑफ कम्युनिटी हो रहा है. तो यहाँ पर 2 सेटलमेंट्स हैं, अर्बन और रूरल. लेट्स डिस्कस फर्स्ट द रूरल सेटलमेंट एनसीईआरटी के तहत, एंड देन योर अर्बन सेटलमेंट. बिफोर दैट लेट्स स्टडी द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट, है ना, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, इट्स अ वेरी बेस लेवल, बट ऑफ कोर्स आई विल टीच एनसीईआरटी टू. तो पहले हम लोग ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स को थोड़ा सा जानते हैं कि कहाँ से है, क्या है, ये कहाँ से शब्द आया, ये सब.
As I have taught 70 around 65% of geography syllabus, क्या क्लास समझ में आई आप लोगों को? I'm not asking that I have been representing myself best in all classes, but I think I am capable of teaching you GS paper 1 in a very good manner. I hope, right? 65% I have completed your class, and in coming month, by the end of February or by the first week of March, I'll be ending the whole GS syllabus. GS paper 3 के कुछ parts रहेंगे, disaster management, environment, ecology, वो भी हम बीच में जब भी मॉड्यूल ऑफ साइकिल चेंज होगा तो आई विल कवर, ठीक है? जीएस पेपर 1 का फुल करिकुलम हमारा खत्म होने वाला है, इंडिया एंड वर्ल्ड ऑल टुगेदर। अभी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे पास पढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्री इन ज्योग्राफी, क्योंकि उस पर फिर पाइपलाइंस भी है, रोडवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट है, उसके बाद तुम्हारा क्या है वो एयरपोर्ट्स पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, एनीवन जिसमें नाम रिकॉल करना भूल गई हूँ, आई हैव इन माई माइंड, कौन सा प्रोजेक्ट मोदी जी ने लॉन्च किया, सम उड़ान, हाँ यस, उड़े देश का आम नागरिक पे ही एक नाम है ना, तो वो भी हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी हम बस पिकुलर नाम भूल गए, होता है ना पेट में है मुंह पे नहीं आ रहा, वैसा कुछ है। बट या ऑल दीज प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स, जितने रिसेंट एयरपोर्ट्स डेवलप हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उड़ान, यस नकुल, उड़ान, तो प्रोजेक्ट उड़ान, कितने पाइपलाइंस बिल्ड हुए रिसेंटली नए नए इंडिया में, साउथ एशिया के साथ कौन सा कोलैबोरेटिव पाइपलाइन बिल्डअप हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू सी द साउथ एशिया एज वेल, साउथ एशिया के साथ कौन कौन से मिलिट्री प्रैक्टिसेस थ्रू द मीडियम ऑफ वाटरवेज हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड वाटरवेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, अंडर वाटरवेज, है ना, जितने पोर्ट्स हैं इंडिया के पास भी और इंटरनेशनली भी, ठीक है, इंटरनेशनली भी हमारे पास छाबर पोर्ट पे बहुत अभी डेलीगेट डिबेट्स हो रहा है। सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया का आज एक आर्टिकल आया है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, आई जस्ट गिव अ ग्लांस ऑन हिंदू बिकॉज आई हैड नो टाइम टुडे टू सी ऑल द आर्टिकल्स एट अ ग्लांस, बट आई नो कि एक आर्टिकल आज सेंट्रल एशिया और इंडिया के रिलेशंस पे आया है ना। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का क्या रोल है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो आई विल गो एंड रीड द आर्टिकल, कल इस पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। अर्बनाइजेशन का सब पॉइंट योर सेटलमेंट, क्योंकि अगर लोग एक साथ कंजेस्टेड सेटल नहीं होते तो ये अर्बनाइजेशन नहीं होता, है ना। सेटलमेंट्स में यू हैव अ बुलेट पॉइंट origin, right? So let's see the precise reason, write it down, the precise reason of origin of settlements is not clear, but in disguise some research has been done. It's still not clear students कि कैसे शुरुआत कहाँ पे पहली हुई, कब हुआ, बट कुछ रिसर्च जो है वो डिस्गाइज इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, उसी के आधारभूत पर हमें समझना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन दैट कॉर्नर. So the events that recorded before this history is not clear and assertive. But the persistent question is still there, that why the permanent settlement persist. Permanent settlement आखिर क्यों आया? तो write it down first point यहाँ पर. Before the permanent cultivation and settlements, before the permanent cultivation and settlement, human beings were nomads,
human beings were nomads, wandering to the different landscapes of the world. Wandering to the different landscapes of the world. Hunting, gathering was the major source of availing the food. Hunting, gathering were the major source for availing the food. But the origin of settlement always has some prominent root of evolution. Prominent root of evolution. सेटलमेंट कैसे हुआ? पहला है स्टूडेंट्स, पहला इज रिलीजियस, सेकंड कल्चरल, थर्ड मिलिट्री, फोर्थ इकोनॉमिक, मिलिट्री या पॉलिटिकल भी कह लें इसको, फोर्थ इकोनॉमिक. So these are the root of evolution of settlement. Religious, write it down. If we see the persistent settlements, if we see the persistence of settlement, it has served several religious purposes. It has served several religious purposes. Religious purposes by mean क्या है? तो कहाँ से शुरू होता है सेटलमेंट? तो सेटलमेंट का सबसे पहला जो चीज है वो ग्रेवयार्ड है. ओके, सो लेट मी आस्क अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. शमशान या फिर जहां पर लोगों को दफनाने के लिए लेके जाया जाता है, सो अलग दूसरे धर्मों में जो भी इस जगह का नाम हो, है ना, सिमेंट्री हो, है ना, या कब्र हो, कब्रिस्तान हो, या फिर शमशान हो. तो किसी भी धर्म में अगर हम बात करें, सो सबसे पहला अगर रिलीजियस कंबाइंड प्रैक्टिस है तो क्या है? किसी की मृत्यु पे इकट्ठे होकर एक जमीन में, एक जमीन को यूज करना, है ना, सेटलमेंट पर्पस के लिए. सेटलमेंट पर्पस इज नॉट सेटलिंग डाउन. सेटलमेंट पर्पस इज लाइक रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी. तो लोगों ने जहां पे भी रहना शुरू किया, अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहला रिलीजियस प्रैक्टिस क्या शुरू किया? लोगों का अंतिम संस्कार, है ना, फ्यूनरल एक्टिविटी ऑफ पीपल. सो दिस वाज द प्राइम कॉज फॉर द सेटलमेंट, कि एक सीमेंटेड एरिया या एक बाउंड्री वॉल्ड एरिया होगा जहां पे लोगों को दफनाया जाए. इफ वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यू हैव बीन सीइंग द ममीज आए दिन पाए जाते हैं. It is a practice of religious activity or their cultural activity, है ना. तो ये दो रूट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट के सबसे प्राइम रीजंस अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हो सकता है. तो लिखिए, द फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट इन हिस्ट्री had served specifically for the purpose of graveyards.
And here a geographer or a social geographer has questioned, what would be the more permanent settlement than a graveyard? किसी की मृत्यु शिला से ज्यादा परमानेंट और क्या हो सकता है? This is, the body is not permanent, we as a soul is permanent. The body will give its life in some point of the time, है ना? What will left is that graveyard, the name on it. So what would be more permanent than the graveyard? So पहला permanent settlement का सबसे बड़ा root of evolution is your the activity, the cultural practices what they used to practice after death. Now, so the settlement established, next sentence, the settlement established with the religious norm, to perform the rituals, of death. ठीक. सेकेंड रिलीजियस एक्टिविटी क्या होगा? सो सेकेंड रिलीजियस एक्टिविटी टेम्पल और मॉस्क और चर्च और गुरुद्वारा और जोरास्ट्रियनीज prayer site or their tribal community belief. So these are the second major attribute towards the religious evolution of settlement. Next line लिखिए. The belief in supernatural powers and offerings towards them for the place of worship, became a center of attraction, and helped in development of settlements. इसी में जोड़ लें, फिर से बोलूं? ओके फाइन. The belief in supernatural powers, subsequently evolved as the common space to offer their prayer all together. साथ में भगवान की आराधना के लिए भी साथ में लोग इकट्ठे हुए, है ना? अपनी बिलीव, अपनी होप और अपनी पर्पसेस ऑफ लिविंग or practicing the element of hope to live the life was a common thing for permanent settlement, as history says. Now, next is cultural root of evolution. Write it down. Cultural root of evolution. So, the settlement has served the purpose of running a house combinedly. The settlement has served the running of house combinedly. So, I have some statements for the dogmas that runs like hashtag in Twitter, that kitchen is for women and warfare is for men. No, it is not like that. Nobody has decided, nobody has divided it.
It's because of the cultural practice, the culture. We brush our teeth, aren't we? One second, I'm just opening the chat box. Yeah. So, brush हर कोई करता है सुबह उठ के? It's a cultural practice or it's a practice? You can add it with your cultural practice because our parents, our family had taught that we are not allowed to pray God unless and until we are not pure. Pure means that we have to wash and clean ourselves, है ना? जिस भी तरीके से करें, वेद के तरीके से करें तो 4 तरीके से क्लीन करते हैं. We go and eject whatever the body has in washroom, we clean our teeth, we clean our face, we bathe, and then we offer prayers to God. So, is it ever happened that कभी ऐसा हुआ सुबह उठ के किसी ने ब्रश करना भूल गए और शाम को याद आया कि अरे आज तो ब्रश ही नहीं किए? If you are mentally good, if you are mentally sound, so it has happened कि ब्रश करना भूल गए. क्यों? बिकॉज मम्मी ने या फिर पापा ने हर दिन रिपीटेडली इस चीज़ की आदत लगाई. कभी ऐसा हुआ खाना खाना भूल गए, ब्रेकफास्ट करना भूल गए, बहुत काम है तो भूल गए, भूख की एहसास रहती है, फिर दिन में लंच किया, है ना? लंच करना तो नहीं भूलते होंगे, चलो लंच भी भूल गए, डिनर करना भूलते हैं, दिन का एक मील तो याद आ जाएगा अगर ब्रेकफास्ट या लंच नहीं किया होगा. प्रैक्टिस, माइंड sends you the information, the message. So here is a delineation of society in historical background. What happened? So how the practice sets you in dividability of work, let's say. So child birth जो है एक woman के body का हिस्सा है. It's not infringed part of woman's body that you are giving birth to a child, right? So to take care of the child and child's requirement, because a man cannot offer breastfeeding to a child. क्या एक आदमी कर सकता है? And a man can offer a breastfeeding activity or a practice for a child? No, he cannot. Right? But a man can go outside to fix things, to bring the things that a woman can eat to breastfeed the child for their ancestral hierarchy maintenance. So from here, the looking after of house, taking care of kids came in the work divisibility of women, and going out asking for millennial jobs came in the divisibility of men. तो यहाँ पर कोई जेंडर इक्वालिटी का वो नहीं है कि अच्छा औरतों को सिर्फ घर तक ही सीमित करना. नो नो, इट हैज़ अ सेट ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस. दैट्स व्हाई दे सेटल डाउन. Nobody has asked कि oh you should remain the same at that time just because that they are serving food to a baby, they are taking care of the baby because nobody else can do that. That becomes the practice that a woman became the household manager, right? Some or the other sense. So यहाँ पर settlement का यही cultural practice भी आया. Write it down now in word. The settlement may also served as a place of house. The settlement may also served as a place to house women and children permitting the men or wander to earn the bread and butter for the family, and the woman will take care of bringing up the family and the child. So this was the work divisibility. वो भी एक कहीं ना कहीं root of evolution था for settlement that ultimately gains to urbanization. Next, political and military route of evolution.
आज का हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देखते हैं, नगर निगम जैसे अभी नकुल ने कहा, तो पॉलिटिकली इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज गवर्न्ड, एडमिनिस्टर्ड, है ना। इसने भी कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन को, सेटलमेंट को इवॉल्व किया, राइट। तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल मिलिट्री। ओके, so once the settlement has taken place in some sense of offering services, write down, once the settlement took place in offering these services, to protect the youths to protect the youths, women and children of the tribes from other warfare attacks, military training and political occupancy started. लोगों ने क्या किया, एक साथ एकजुट हुए, अपने आप को मिलिट्री शिक्षा दी, लड़ना शुरू हुआ, एक दूसरे कबीले पे आक्रमण, उस कबीले को अपने अंडर करना, एंड देन ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड हैपेंड, दिस आल्सो टर्न टू सम और द अदर काइंड ऑफ सेटलमेंट। तो यहाँ पे लिखिए मिलिट्री ट्रेनिंग एंड पॉलिटिकल ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड also evolved the settlement origin of human beings, the settlement origin of human beings. Now fourth is economic. Fourth is your economic. So यहाँ पर इकोनॉमिक पे ही ये तीनों डिपेंडेंट होंगे, अगर कैपिटल नहीं है तो ये तीनों कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिदम टूट जाएगा। सो इकोनॉमिक रूट ऑफ इवोल्यूशन is the major requirement for religious, military and political leaders, to supply food, fodder, clothes for the people who are settling down in a specific regime or territory. This brings the economic activities in some or the other manner lead to settlements. Now, so there are three types of settlements. One again, so हम लोग origin पे बात किए. One is your ruler settlement. Second is your urban settlement. And then it has duo, ruler, urban settlement. It has a duo, ruler, urban
settlement. So write it down here. First, what is rural settlement? क्या है? Rural settlements derive their support or basic economic needs. Rural settlement derives their support or basic economic needs from land based primary economic activity. Okay, अब I'm repeating it again. The rural settlements derive their life support of basic economic needs. रूरल सेटलमेंट का जो इकोनॉमिक नीड्स है लाइफ जीने के लिए is based on land and primary activities. Is based on land and primary activities. Okay, whereas urban settlement, whereas या फिर नीचे लिख लीजिए, whereas छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी में इस तरीके से है नीचे, urban settlements depend on, urban settlement depend on processing of raw materials, processing of raw materials and manufacturing of finished goods, and manufacturing of finished goods on one hand, on one hand, and with all the activities, all the activities on the other hand, it creates, with all the activities on the other hand, it creates the variety of services, the variety of services for people. Next, rural and urban settlement together. The assimilation of rural settlement with urban regime, the assimilation of rural settlement with urban regime, where within the urban territory, where within the urban territory people are practicing their rural affairs. Their rural affairs is a collaborative rural urban settlement. Is a collaborative rural urban settlement. आप सब जितने लोग अर्बन एरिया से आ रहे हैं उसके आउटस्कर्ट्स में रूरल सेटलमेंट है, इज इट और नॉट? उसके आउटस्कर्ट्स में, शहर से बाहर निकलिए, गांव खेत दिखेगा, कहीं पे भी रह रहे हो, है ना? तो वहां पर एक आइसोलेशन ऑफ रूरल और अर्बन हिंड्रेंस नहीं है. सो देयर इज अ कनेक्टिविटी कि लोग अर्बन एरियाज के साथ जुड़े हुए भी हैं और वहां पर अपने रूरल अफेयर्स को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. तो दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ सेटलमेंट, रूरल अर्बन सेटलमेंट. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको?
Everybody is clear? Now the next topic is types of rural settlement. We are discussing टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, फिर टाइप्स ऑफ सिटीज हम लोग देखेंगे कि कैसे हैं इंडिया में. क्योंकि दुनिया के सेटलमेंट्स पे हम यूपीएससी में उतना बात नहीं करते हैं, हमारा मेजर कंसर्न इंडिया रहता है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. और कोई समस्या है अब है समझने के अलावा? क्या है? ओके, हाँ, यूज इसका क्या है सेटलमेंट जो मैं पढ़ा रही हूँ अर्बनाइजेशन में. ठीक है, इसका यूज दो तरीके से अब है. पहला तो ज्योग्राफी में खुद है कि किस तरीके से सिटीज जो हैं अब कोलैप्स हो रही हैं, हमें आवश्यकता कैसे है स्मार्ट विलेजेस की, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मार्ट विलेजेस, है ना. तो यही है कि बिना कॉन्सेप्ट समझाए हुए कि विलेज का सेटलमेंट्स कैसा है, हम कल कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को लिंक नहीं कर पाएंगे. कैसे हम लिंक करें कि ओके ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हैं, हैमलेटेड सेटलमेंट्स हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट्स हैं, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स हैं विलेज टर्म्स में. इन सेटलमेंट्स के साथ अब कैसे चेंजेस होने चाहिए? क्या हमारी अर्बन स्पेसेस के साथ साथ रूरल स्पेसेस भी कंजस्टेड नहीं हो गए हैं, है ना. तो इस तरीके से आपको यूपीएससी में ये सब चीज़ें हो सकता है कॉन्सेप्चुअली 4 मार्क्स का लिखना पड़े, फिर बाकी का 6 मार्क्स आपको अभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज लिखना पड़े. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को हम समझा रहे हैं ताकि कल समस्याओं पर हम बात कर सकें, कैसे पहले बैकग्राउंड में चीज़ें बढ़ी और अब उन स्थितियों पर कैसे समस्या है और किस तरीके का समाधान, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सॉल्यूशंस वी कैन टेक. तो इस तरीके से यूज़ है. सोशल ज्योग्राफी में इसका इस्तेमाल मेन परीक्षा में पूछा जाता है, जहाँ पे ज्योग्राफी और सोसाइटी दोनों से सवाल है. जैसे इस बार पॉपुलेशन पे एक सवाल मेन एग्जाम में पूछ दिया गया था, आप सबने अगर देखा हो जीएस पेपर 1 तो ऐसे ही है इसका यूज़, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं. तो है ना, यूपीएससी के सवालों में जीएस में बच्चों कभी कोई चीज़ एक लिंक्ड नहीं है, मल्टी लिंक्ड है. ये ब्यूटी भी है इस एग्जाम के प्रिपरेशन की कि सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड. तो यहाँ मत समझिए कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ ज्योग्राफी के विषय सूची में ही पढ़ा रहे हैं, सोसाइटी में भी है. तो कल कैसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं, इसका यूज हम क्यों पढ़ा रहे हैं, कल की क्लास में जब हम इसको एंड करेंगे इस पूरे पूरे टॉपिक को, तब हम समझाएंगे इन सबको. ठीक है, बाय द मोड ऑफ वीडियो एंड मैपिंग एंड एवरीथिंग. इंडिया वर्ल्ड हम साथ में पढ़ा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड पे इतना सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि प्रॉब्लम्स इंडिया पे ही मोस्टली जीएस पेपर 1 का ट्रेंड है पूछने का. कोई अमेरिका की प्रॉब्लम पे उतना बात नहीं करता जीएस पेपर 1 में. ठीक है, बट स्टिल यू मस्ट नो एवरीथिंग. Yes, Nakul, gig economy was connected with women in paper 1, right? Very true. So you don't know, you must know the interlinking and uses of information. अगर आपको इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं आया तो यूपीएससी में आप एक अच्छा और बेहतर और अलग आंसर नहीं लिख सकते हैं. सो इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, उसको कैसे यूज करना है, दिस इज द बॉल गेम इन यूपीएससी, है ना. तो लेट्स सी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. पहला टाइप है क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड. क्लस्टर्ड, agglomerated and nucleated. Agglomerated second is your hamulated settlements. Third is your dispersed or isolated settlement.
ठीक है, अब तीनों सेटलमेंट्स को हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी में ही है आपके, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, बट मैं फिर भी समझा देती हूँ। हाँ, और एक और चीज, अवार्ड्स मिलते हैं सिटीज को स्वच्छता अभियान पे। इस पे पीआईबी के वीडियोस भी आए हैं काफी सारे कि कौन सी सिटी रैंक 1 है इंडिया में स्वच्छता अभियान पे, है ना। इसको भी थोड़ा सा आप लोग देखिएगा घर जाकर, राइट। कल इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, आई विल ट्राई टू डाउनलोड द वीडियोस कि किस तरीके से अब अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में सैनिटेशन एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज वेरी एसेंशियल। बीजिंग का मॉडल किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ चाइना का, विथ टेरेस फॉरेस्ट्री एंड टेरेस फार्मिंग, है ना। वहां पे टेरेस पे ही जंगल उगाए जा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। दूसरा है वर्टिकल एक्सपेंशन है शहरों में, हॉरिजेंटल एक्सपेंशन को कैसे कम करके मल्टी स्टोरी फ्लोर्स बनाया जाए ताकि पॉपुलेशन को बसाकर वहीं पे फिर टेरेस फॉरेस्ट्री का पूरा पूरा प्लानिंग किया गया। तो ये सब विल कम टू एड्रेस एंड ट्राई टू मॉडिफाई इन आवर ओन रिस्पेक्टिव मैनर, ठीक है। तो लिखिए पहले क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या है। इट्स अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। यूपी के घर आपको अगर देखने को मिल रहे हैं, कहीं अगर किसी ने यूपी ट्रैवल किया है ट्रेन से, कानपुर अगर कोई ट्रेन से जा रहा है तो ये रेल की पटरी है और इसी से जस्ट सटा हुआ घर है। घरों के बीच की दीवार भी जो है ये ऐसी ही है, राइट। यहीं पे अगर आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए तो एक सेटलमेंट यहां है, एक सेटलमेंट यहां है, एक यहां, ये रूरल का हम बात बता रहे हैं, अर्बन पे भी माए भी नहीं, लेकिन यूपी में आपको गांव में भी इस तरीके के सेटलमेंट दिखेंगे कि घर के बीच में जो स्पेसिंग है वह नहीं है, मतलब इट्स अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मेकअप किट में भी खट बंद एक साथ, है ना, राइट। सो इस तरीके से इफ वी गो टू द, अब यहां पर कैसे, हाउ कैन यू रिलेट द पॉपुलेशन। सो जहां पर भी इफ यू आर फाइंडिंग क्लस्टर्ड सेटलमेंट विच मीन्स द पॉपुलेशन इज मेजरली हाई, राइट। सो यूपी, पंजाब, मतलब सेंट्रल स्पेसेस, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर you will find the clustered agglomerated nucleated settlement because the population is very high. Same with West Bengal. But if you see the moderately or sparsely populated areas, तो वहाँ पे you have dispersed or isolated settlements. Hamulated settlement has moderate population. So let's come to know this. Clustered settlement पे पहले लिख लीजिए थोड़ा बहुत. The clustered rural settlement is a compact or congested type of settlement. Is a compact or congested type of settlement closely built up of houses, closely built up of houses in this type of village, in this type of village there is zero separation of land boundaries. There is zero separation of land boundaries. The areas are built up very closely. The areas are built up very closely. These settlements have such geometrical space of alignment. These settlements have such geometrical space of alignment. तो क्या है, रेक्टेंगुलरली भी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रेक्टेंगुलरली है ना, रेडियल इस तरीके से 90 डिग्री पे, राइट, सेंट्रीपेटल लाइक दिस, and linear like this.
So the settlement have different geographical dimensions in rural area in clustered settlement. Next is your hamleted settlement. Write down hamleted settlements. Hamleted settlements means fragmentation of houses. Hamlet settlement means fragmentation of houses separately by each other with specific names like mohalla, pana, gali, dhani, mohalla, pana, gali, dhani. These segmentation of settlements often motivated by social and ethnic groups. These settlements are commonly seen in lower plain of Ganga, in lower valleys of Himalayas and Chandigarh. चंडीगढ़ भी प्लान्ड है, हैमलेटेड है, सेग्रीगेटेड है, एक दूसरे से अलगाव है उसमें, है ना. So Chandigarh, lower valleys of Himalayas and lower Ganga plain. Now next is your dispersed or isolated. Dispersed or isolated. So write it down here. Dispersed or isolated settlement pattern in Indian rural society. Dispersed or isolated settlement pattern in Indian society appears in form of isolated huts, HUTS. Yes, isolated huts or remote jungle areas or on small hills like Meghalaya, Uttaranchal, Himachal, and in some parts of Kerala. There is one more type of settlement, rural settlement, is semi-clustered. Settlement. So write it down here. Semi-clustered or fragmented settlements may result from tendency of clustering in a restricted area. Here also
द सेग्रीगेशन टुक प्लेस बट इन अ क्लोज मैनर। अब देखो हैमलेटेड में भी यही हुआ कि सेग्रीगेशन जो है वो है बट दूर दूर है। सेमी क्लस्टर्ड में सेग्रीगेशन हैज क्लोज स्पेस, बीच में स्पेस है, ठीक है। सो यहां पर इफ यू गो टू द सेटलमेंट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, if you go to the settlements of Jharkhand and Chhattisgarh, you will find semi-clustered settlements there. You will find semi-clustered settlements there. Now we will discuss the evolution of urban settlements in India. ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर अर्बनाइजेशन और किस तरीके के सिटीज बढ़े हैं, देन यस उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सिटीज पे बात करेंगे एंड देन प्रॉब्लम्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को कल डिस्कस करके कल हम थोड़ा सा रिसोर्स भी आई थिंक क्लास में ही शुरू कर देंगे, ठीक है। यस अब है आपने मैम बोला प्लीज से। Okay, again I am repeating it. A semi-cluster or fragmented settlement is a tendency of clustering the settlement, is a tendency of clustering the settlement in a segregated mode, in a segregated mode but in a closed space. दोनों घर के बीच में दूरी तो होगी अब है, लेकिन कम दूरी होगी। हेमलेटेड की तरह ज्यादा दूरी, आइसोलेटेड की तरह बहुत ज्यादा दूरी नहीं होगी, कम दूरी होगी, ठीक है, दो घरों के बीच में। सो फिर मैं फिर से सेंटेंस बोल देती हूँ। सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट इज अ टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग between both the houses in segregation in a very close space, in a very close space, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the rural settlements of Jharkhand, the rural settlements of Chhattisgarh, the rural settlements of Odisha. So these are the rural settlements of India, ठीक है। अब हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया पर 5 मिनट के ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू जस्ट टेक अ ब्रेक, किसी को चाय वगैरह पीनी है तो पी लो, ठीक है। So we'll discuss post 5 minutes urban settlements. Okay, so let's start class. The urban settlements in India, of course. Smart urban city, smart city, ये सब 200 सिटीज जो हैं देश की स्मार्ट सिटीज में है। किस तरीके से उसको स्मार्ट बनाया जाए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट, है ना। तो कल जब स्मार्ट सिटीज पढ़ेंगे तो पहले इंडिया का स्ट्रक्चरल और अर्बन सेटलमेंट्स को आज जान लेते हैं, तभी हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सो डेफिनेशंस में हमने कर लिया, अनलाइक रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट्स में प्राइमरी एक्टिविटी हो सकती है बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन शुड इंडल्ज इन majority of population should indulge in service sector, right? Service sector or tertiary sector, right? So as mentioned earlier, जब हिस्ट्री की बात करें
तो हम लोगों का इंडिया का जो शहर था, सिटीज जो थे वो कंप्लीटली डिफरेंट थे आज के शहरों के मुकाबले। हालांकि अभी भी कुछ कुछ झलक जो है, सिनॉप्सिस और प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स जो है वो आपको दिखेंगे। अगर आप हैदराबाद का चार मीनार देख रहे हैं, दिल्ली का कुतुब मीनार या दिल्ली का लाल किला, सो यू came to know कि how the cities were planned. So when I was learning urban geography in my college level, so my professor used to taught me that how Delhi was a cosmopolitan city. Cosmopolitan का मतलब होता है a city where number of people residing from different areas. So Delhi was itself a cosmopolitan पहले से, अगर हम geography के terms में बात करें. So this is your Red Fort, and with Red Fort, if somebody has came to Delhi, so one gate which opened towards Kashmir, आज का कश्मीरी गेट बन गया. One gate which opened towards Indore, Indori gate, which one opened for Lahore, Lahori gate. All right. So all these gates were located in the center area of Delhi. Right. So all these shows that we had a different concept of cities in earlier history of time. तो लिखिए, the earlier history has imprints of the city and structure in terms of lineage, hierarchy and administration. In terms of lineage, hierarchy and administration. Cities are connected directly or indirectly altogether. Cities are connected directly or indirectly altogether. In terms of giving service, in terms of giving security, in terms of giving allocation, in terms of giving residence, हर तरीके से connected है अपने आसपास के एरिया से. ठीक है. नाउ फंडामेंटल ऑफ इंडियन सिटीज जो अगर हम हिस्ट्री में देखें, लिखने की जरूरत नहीं है, तो फंडामेंटल्स के पीछे यहाँ का जितना भी राजशाही इतिहास रहा है वो रहा है ना. इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, सो दिल्ली हैज इट्स ओन हिस्टोरिकल सल्तनत वाला पूरा कैलेंडर. लोधी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, मुगल्स का है ना. सो हर एक सेक्शन ऑफ टाइम में डेवलपमेंट ऑफ सिटी हैज चेंज, द पैटर्न हैज चेंज. ठीक है. हर एक आर्किटेक्चर का एसिमिलेशन आपको देखने को मिलेगा. तो द सिटी लाइफ ऑफ इंडिया हैज इट्स बैकग्राउंड विथ लाइनेज, किंगशिप, हायरार्की. ठीक है. अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद द सिटी लाइफ हैड कंप्लीटली चेंज्ड इन इंडिया. इंडिया में टाउन और टेंट टाउन का कॉन्सेप्ट था. मतलब एक दिन में जो है टेंट सिटी पूरी पूरी बन जाती थी, लोग ठहरते थे उस टेंटों में. ये मुगल के टाइम पे शुरू हुआ है ना. तो इस तरह के शहरों का भी आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं. व्हाट इज अर्बन, अब यहाँ पे लिख दीजिए. व्हाट इज सिटी एंड व्हाट इज अर्बन सिटी. इस तरीके से लिखिए, व्हाट इज अर्बन सिटी. सो अर्बन सिटी इज अ रीजन where a group of people residing all together to perform the service sector jobs, to perform the service sector jobs. ठीक है. ये अर्बन सिटी है. अर्बन. डाउन बिलो, व्हाट इज सिटी. व्हाट इज सिटी. A city is a
demarcated region. A city is a demarcated region where group of people live together, sharing their no natives. वहां उनकी जड़ें नहीं होती हैं, ठीक है, बस साथ में रह रहे हैं. Living all together, sharing their no natives. ठीक है, तो हिस्टोरिकल टाउन डिवीजन ऑफ इंडिया में हम लोग, हिस्टोरिकल टाउन डिवीजन ऑफ इंडिया पहले देखते हैं और फिर अभी का न्यू अर्बनाइजेशन को देखते हैं. सो हिस्टोरिकल टाउन डिविजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, फर्स्ट इज योर एंशियंट टाउन्स. Second is your medieval towns. And third is your modern towns. So write it down here, ancient towns. There are number of towns in India. There are number of towns in India carrying the historical background and lineages. Carrying historical background and lineages. Many of them have developed nowadays. Many of them have developed nowadays with explicit form of contemporary city. आज के समय के दौर पे शहर बन चुके हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वाराणसी, एंशियंट टाउन है ये. कितने भी ट्रैवलर्स इंडिया में किस भी सदी में आए, इस शहर का जिक्र हर ट्रैवलर ने किया, वाराणसी. नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली काशी कॉरिडोर को लॉन्च किया. सो एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ कंटेम्पररी सिटी. करेक्ट. Now, second is your Prayagraj. Second ancient city is your Prayagraj. ये religious और cultural practice के evolution पे बना. तो अब you can connect. प्रयागराज का अगर root of evolution देखें तो किन दो basis पे city बना? On which two bases it has developed as a city? Cultural and religious practices. Correct. Patliputra is also ancient history, ancient type of town or city. Patna, Patliputra, अशोका के टाइम पे भी बहुत ग्रो करता है. एक सेंटर ट्रेड रिजीम है, राइट. नाउ सेकंड इज योर मेडिवल टाउन्स, जो इस काल में फली फूल होते हैं, पूरा पूरा एक्सपेंशन होता है. So today's more than existing towns in count, have the developmental origin in medieval India. Have its developmental origin in medieval India. सबसे बड़ा एग्जाम्पल आगरा. Is it? Agra, Delhi, Hyderabad,
So for example, Agra, Delhi, Hyderabad, Lucknow. And then you have modern towns. You have modern towns. So write it down here. The Britishers and Europeans. टुमारो आई विल ब्रिंग हिस्ट्री का भी मॉडर्न हिस्ट्री का बुक स्टूडेंट्स आज हम लेके नहीं आए हैं एनसीईआरटी का. सो हियर यू कैन इंटरलिंक बिटवीन द मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में कि किस तरीके से जब इंडिया में टाउनशिप डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स कर रहे थे तो डिवीजन ऑफ टाउन्स कैसे किया गया ब्लैक टाउन वाइट टाउन का. तो कल वो एनसीईआरटी लाके आई विल गिव सम ऑफ द लाइंस फ्रॉम दैट एज वेल. ठीक है. और वहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीज आई. सो 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का चैप्टर है हिस्ट्री का, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विद द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन यूरोप एक पूरा पूरा टॉपिक है. यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल. आई विल ब्रिंग दैट एनसीईआरटी. एंड 12th क्लास मॉडर्न एनसीईआरटी डिवीजन जो है थर्ड, तो दोनों को हम लोग कल रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ेंगे. फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ नाउ अ डेज विथ अ सिटी एंड सेटलमेंट वो भी हम लोग समझेंगे. ठीक है. सो दैट यू कैन गिव अ राइट एंड ट्रुथफुल अप्रोच फॉर योर मेन एग्जाम आंसर राइटिंग. So modern towns, write it down here. The British and other Europeans have developed a number of towns in India, starting with the coastal plains of India, for their trading activities. For their trading activities. Like Mumbai, Chennai, like Mumbai, Chennai, Kolkata, Daman and Diu, all these. उसके बाद यहाँ पर लिखिए हिल स्टेशंस भी एक नया फॉर्म ऑफ सिटी ब्रिटिशर्स ने इसी में मॉडर्न टाउन्स में लिख दीजिए नीचे कोलन हिल स्टेशंस. हिल स्टेशंस. So with modern exploration of India during British time, Britishers developed or established administrative centers and towns as their summer resorts, and added new administrative and military areas to it. New administrative military areas to them. For example, Kulu, Manali, Daltonganj in Jharkhand, of course, Shimla, okay. Now urbanization in India. सो यहाँ पर एक पूरा पूरा पैसेज जो है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, आई एम लिविंग इट बिकॉज एनसीईआरटी में टॉपिक जस्ट नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड इन इंडिया. आई एम गोइंग टू डिस्कस टुमारो विद द प्रॉब्लम्स. किस तरीके से अर्बनाइजेशन एक्सप्लोर हुआ, बढ़ा, अर्बन एक्सप्लोरिंग क्या है एंड द प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, क्योंकि अभी हम लोग क्लासिफिकेशंस पे ही बात कर रहे हैं. तो हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशंस डिस्कस कर लिया. Second classification is your functional classification. Write it down the topic. Functional classification of towns. तो first functional classification is administrative towns and cities. पहला है administrative towns and cities. जहां पर मुख्य तौर पर गवर्नेंस सरकार इन सब का काम हो, उस लिए
एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बनाया जाए. एग्जाम्पल, नुसांतरा एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन रहा है इंडोनेशिया का. इट विल बी अ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. ऐसा नहीं कि शहर बसता गया, भीड़ बसती कि चलो यहीं से सरकार शुरू कर दे. नो नो नो, इट इज पर्पसली बीइंग मेड एंड बिल्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, राइट. सो यहां पर लिखिए टाउन सपोर्टिंग ऑल द क्राइटेरिया, town supporting all the criteria of higher order are administrative towns. Are administrative towns such as Chandigarh, New Delhi, Bhopal, such as Chandigarh, New Delhi, Bhopal, Shillong, Hyderabad, Pondicherry, Srinagar, Chennai, Jaipur. So this is your administrative town and cities. Second, industrial towns. Second functional classification is industrial towns. जहां पर इंडस्ट्री के सारे एलोकेशन, अभी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे जानेंगे व्हाट आर दी prime requirement for developing an industry in any region. So we will go to the background of course industrial revolution, why started in Europe, and then coming back to India. So here India has some of the peculiar industrial cities जो कि वहाँ के क्राइटेरियाज में फिट बैठा तो वहाँ पे इंडस्ट्री शुरू हुई. एग्जाम्पल बोकारो है ना, दामोदर नदी के पास है. जमशेदपुर कोयल नदी के पास है. So river is a very important and prominent requirement for water facilities. तो कुछ क्राइटेरियाज पे इंडस्ट्रियल टाउन्स भी बने इंडिया में. सो इन इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मूव्स, industries constitute prime moves and motives to force cities such as Mumbai, Salem, Coimbatore, Jamshedpur, Hooghly, Bokaro. Now third functional classification is your transport cities. Transport cities जहां पर पोर्ट्स डेवलप हुआ मेजरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज के लिए, वहां पर भी सिटी एलोकेशंस हुए. सो दे मे बी पोर्ट्स, बंदरगाह, पोर्ट्स, ठीक है. इसको हम लोग पोर्ट या ट्रांसपोर्ट सिटी कहते हैं. पोर्ट सिटीज भी कह सकते हैं या ट्रांसपोर्ट सिटीज भी कह सकते हैं. सो पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिटीज, they may be primarily engaged in export and import activities. They may be primarily engaged in import and export activity of goods and commodities such as Visakhapatnam, Kandla, Kolkata, such as Visakhapatnam, Kandla, Kolkata, Kochi, etc. Next functional classification is your commercial
towns. Next functional classification is your commercial towns. So write it down here. Commercial means business purposes के लिए, जहाँ पे business and commerce हो रहा है. So towns and cities specializing in trade and commerce, where the business activities are majorly in format like Ahmedabad for cotton industry and business and commerce, Ahmedabad, Mumbai. So Mumbai, write it down. Mumbai is also called economic capital of India. Mumbai is also called the economic capital of India. Surat, Satna, right? Now, mining towns. The next classification is mining towns. These towns have developed in mineral rich areas. These towns have developed in mineral rich areas such as Raniganj, Jharia, Singrauli, Digboy, of course in West Bengal. Now, the next functional classification is cantonment town. Cantonment मतलब military की छावनी जहां पर है, कैंट्स हैं. Cantonment towns. ठीक है? So write it down. These towns emerged as garrison towns. अपने आप में शहर बना. Garrison towns, GARRISSON, garrison towns, as Ambala, Jalandhar, Udhampur. Udhampur is also base camp for Air Force of India, right? Now, the next classification is educational town. Educational towns. So starting as center of education, some of the towns have grown into major campus towns. Such as Roorkee, Varanasi, Aligarh and Allahabad. Next, religious and cultural town. यहाँ पे भी root of evolution, religious and cultural town. Okay, I'm repeating the educational town फिर से. Educational town starting with the center of education which emerged as a center of human association and settlement.
grown into major campus towns. Grown into major campus towns. Example, Roorkee, IIT Roorkee, Varanasi for BHU, Aligarh for Aligarh Muslim University, Pilani for BITS Pilani, Allahabad for Allahabad University, Delhi for Jawaharlal Nehru and Delhi University, Kota for the coaching hub industry of India. So these are the educational towns of India. All right. Next is religious and cultural town. लिखिए next functional classification, religious and cultural town. Varanasi, Mathura, Amritsar. Varanasi, Mathura, Amritsar, Madurai, Rameshwaram, Pushkar, Tirupati, Allahabad, Haridwar, Ujjain, Kurukshetra, Ajmer, Jammu. All these are religious and cultural town of India. Varanasi, Mathura, Amritsar, Madurai, Pushkar, Puri, Ajmer, Rameshwaram, Kurukshetra, Haridwar, Ujjain, Tirupati, Ayodhya. These all are the religious and cultural towns of India, which developed and grow due to the populism practice of culture and religious activity, cultural and religious activity of population. Next functional classification is tourist towns. Functional classification is tourist towns. Nainital, Mussoorie, Nainital, Mussoorie, Shimla, Ooty, Nainital, Mussoorie, Shimla, Ooty, Panchmadi, Kulu, Manali, Ujjain, are the tourist cities of India developed because of its dynamic and favorable climatic condition, developed because of its dynamic and favorable climatic condition, attracted majority of tourists in India. Now, with the settlement and urbanization, the Indian society got globalized. Problems तो कल डिस्कस करेंगे. तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी द नेक्स्ट टॉपिक, कि कैसे इंडिया और वेस्टर्नाइज्ड होता है in terms of cloth, in terms of speaking, language, food activity, है ना. So globalization of Indian society.
I'm again taking 2 minutes of break before starting the topic, globalization of Indian society. So yeah, globalization of Indian society. So let's start. Globalization is the process by which society is open up for the assimilation and acceptance of global culture. Global culture. Global culture means fashion, of course, politics, food habit, education, all right. Silent, salient features of globalization. Salient features of globalization. So write it down. Globalization is often seen as a factor of economic growth. So first, economic growth. This also interlinks your sociology part of GS paper 1. Okay. Second, radical, yeah, foreign direct investment, improvement in foreign direct investment. Then, diffusion of information, awareness and change in mode of production. Diffusion of awareness and change in mode of production. Regulation of trade on international platform. Regulation of trade on international platform. यहाँ पर एक और negative impact of globalization, collapse of indigenous industry in international market. Collapse of indigenous industries in international market. Variety in consumerism. Variety in consumerism like McDonald's, CCD,
जो कि बंद हो चुका है ऑफ कोर्स, स्टारबक्स और टाटा ग्रुप, विस्तारा, ज़ारा, नाइके, राइट. Exchange of ideas, technologies and culture. Exchange of ideas, technologies and culture. Next salient feature, multi-dimensional approach of development. How all these is connected to urbanization? Why I am teaching silent features of globalization? Because how it is connected to urbanization. How? How it is connected to urbanization? यहाँ पे एक टॉपिक लिख लीजिए. How it is connected to urbanization. Correct. So यहाँ लिखिए पहले, globalization affect or expand, globalization affect or expand employment, working condition, income, service sector and security. Globalization affect or expand employment, working conditions, income, security and culture of people. And culture of people, all these criteria are required for a city expansion. Okay, next, the reduction of jobs in public sectors has resulted the expansion of jobs in private sectors in India. Expansion of jobs in private sectors in India due to globalized outsourcing. Due to globalized outsourcing. Due to globalized outsourcing, which result the functional development of, which result in the functional development of the Silicon Valley of India, Bengaluru. Silicon Valley of India, Bengaluru. And so other IT expanded towns. So other IT expanded towns like Gurugram, Noida, Indore, Chennai, Hyderabad. But there is also a negative impact of expansion of private sectors in jobless market. There is also a negative impact of private sectors in jobless market. यहाँ पे भी लिखिए.
Private sectors have a policy of hire and fire workers at will. Private sectors have policy of hire and fire workers at will, which result to work in extreme pressure situation, to work in extreme pressure situation and to compete deliver the best to compete in the job market. ठीक है, नेक्स्ट यहां पर लिखिए रैपिड प्राइवेट सेक्टर into education and health services. Rapid private sector into health and education services lead to more expensive burden on population. Lead to more expensive population burden on population. ठीक है, नेक्स्ट with the global concept of globalization, with the global concept of globalization, migration has become more countable in developing countries. Globalization has adversely affected the market and income of farmers in India. Globalization has adversely affected the market and income of farmers in India with packaged food concept. With packaged food concept. आशीर्वाद आटा जहाँ पर लोग गेहूं लेकर पिसाते थे डायरेक्ट, वहां पर आशीर्वाद आटा का पैकेट आता है, पैकेजिंग हो रही है. इट गिव्स यू मोर चार्म, है ना. ओके, नेक्स्ट द हाई डिग्री ऑफ कल्चरल पॉल्यूशन. The high degree of cultural pollution in both the urban and rural societies. In both the urban and rural societies, the younger generation is adopting the Western culture of food. The younger generation is adopting the Western culture of food, clothing, jeans पहन रहे हैं, ripped jeans है ना, फटे हुए. Clothing, hairstyle, turning their hairs into brown, कौए की तरह. Hairstyles, and of course shelter and way of communication. Shelter and way of communication. Globalization has also affected the etiquettes the etiquettes, 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 manners, fine arts, literature, music, dance, paintings, sculptures, and all over the gamut of life. And all over the gamut of life.
So there is both the good and bad side of globalization. There is both good and bad side of globalization. It definitely enabled, it definitely enabled the urban concept and culture in India. It definitely enabled the urban concept and culture in India with progressive societal manner, with progressive societal manner, but on the other hand, it also targeted, but on the other hand, it also targeted and submised, दबा दिया, submised the classic cultural roots of India and Indian concept. The classic cultural roots of India and Indian culture. Okay? It helped in intensification of multinational, it helped in intensification of multinational, international, it helped in intensification of multinational, international, and transitional linkages, and transitional linkages in all spheres of human activity. In all spheres of human activity, it gave us the concept, or it promotes the concept of, it promotes the concept of borderless world, borderless world, कि अब कुछ भी isolated नहीं है, everybody is connected in some or the other manner. कहाँ पे रिपीट करना है दिव्या, नकुल प्लीज से. Intensification of multinational, intensification of multinational, international, and transitional linkages then कहाँ से, प्लीज से द रिपीटेड लाइन. किसी ने लिखा है यहाँ पर, उसके पहले का पॉइंट. ओके ओके, बोथ बैड एंड गुड साइड. ओके फाइन. So globalization has undoubtedly developed the progressive culture of urbanization in India. Globalization has undoubtedly developed the progressive urban culture in India, but on the other hand, it submised the classic cultural roots of India. It submised the classical cultural roots of India. So we are more fancy and trendy in wearing jeans. लेकिन यहीं पे कोई कुर्ता धोती पहन के आपके सामने आ जाए तो लोग, आपके यंग एज वाले बच्चे 20, 21, 22 वाले, कुर्ता धोती पहन के निकलो एक दिन, जाओ किसी क्लब में, किसी कैफे में बैठने, people definitely going to see you, right? So enabled, yes, कुछ भी लिखो, it enabled, expanded, anything, मतलब
आई डोंट प्रिपेयर नोट्स ना, आई मेक यू राइट लाइक पढ़ाते हुए ही। तो इनेबल्ड लिखो या फिर एक्सपैंड लिखो, किसी भी तरीके से। उसने शहरीकरण को बनाया, बिल्कुल बनाया, लेकिन वहीं पर जो हम लोगों का अपना ओरिजिनलिटी था, we are losing it, yeah, so we are losing the face of originality and cultural classical roots of Indian, being Indian। तो यही है। यहां से आगे बोलूं, यहां तक लिख लिया? ओके। intensification of multinational intensification of multinational international intensification of multinational international and and transitional linkages in all sphere of human activity, in all sphere of human activity, including trade and commerce, including trade and commerce. Next, globalization promotes the borderless world. Globalization promotes the borderless world, but on the other hand, it disguises the village and rural pattern of India. It disguises the village and rural pattern of India. So, closing it down here, the class. Tomorrow, I'm going to discuss the contemporary issues of urbanization in India and world, of course. वर्ल्ड में भी कैसी दिक्कतें हैं, किस तरीके का आइडियल प्लानिंग ऑफ अर्बनाइजेशन कुछ कुछ शहरों ने अडॉप्ट किया, किन किन शहरों ने अब नहीं समझते हुए कोलैप्स सिटीज के लिस्ट में आ चुके हैं, और वर्ल्ड का एक लिस्ट निकलता है बच्चों कि किस शहर में बसा जाए, रिस्क ऑफ हैबिटेशन इन विच सिटी, तो उसको भी हम लोग कल लिस्टिंग देखेंगे। अभी का करंट 2021 का रिस्क जोन में सबसे कम आई थिंक बैंगलोर है, यू कैन शिफ्ट इन बैंगलोर, इट्स अ वेरी गुड सिटी विद द रैंक 1 इन इंडिया। तो कौन से शहर वहां पे भी रिस्क जोन में है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन इसको पब्लिश करता है ये भी आई विल डिस्कस इट टुमारो। कौन सी सिटीज गुड सिटीज हैं, कौन सी बैड सिटीज हैं, केप टाउन का वाटरफॉल कैसे हो गया, चेन्नई एक सिटी होते हुए वाटर शॉर्टेजेस कैसे, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कल देखेंगे। कल बहुत सा कल कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे क्लास है, तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। तो प्रिपेयर होके आना, 7:40 7:45 तक कल की क्लास होगी। यस अभय, प्लीज आस्क द हेल्प। हाँ, आई थिंक थोड़े उनके इनकम्प्लीट है, आई विल इन्फॉर्म यू टू कंप्लीट एंड अपलोड, ओके। ज्योग्राफी में भी कुछ इनकम्प्लीट है, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क सिट एंड फिनिश इट विद टाइम, ठीक है। मेरे भी रहते हैं एग्रीकल्चर से, मुझे पता है, उस पर काम अभी तक मैंने किया नहीं है, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन इट। सो आई विल इन्फॉर्म आदित्य सर फॉर अपलोडिंग द एड, लर्निंग एड। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स दैट आई नो? मेरे भी एग्रीकल्चर से नहीं होंगे अपलोड, अब है मैंने वहाँ से अभी सबमिट नहीं किया, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड देन अर्बनाइजेशन, ये एड्स मेरे अभी रह रहे हैं टू अपलोड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो भी आई विल अपलोड असैप, बाकी मैं ये इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर दूंगी। और कुछ, कोई हेल्प? हाँ, मैं उनको बोल दूंगी। हाँ, एक्चुअली ही इज़ बिजी इन सम अदर एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूट, सो उन्होंने अपलोड नहीं किया होगा। मैं उनको ये मैसेज कन्वे कर दूंगी कि जल्दी से अपलोड कर दें, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर इट, ठीक है। एनी अदर हेल्प, एनी अदर डाउट?
Okay, thank you. Ending the class, students. Take care. See you all tomorrow. Bye. Thank you. Bye.